and welcome back to my channel. I hope you guys are fine and at home. And finally, here's the first episode of my makeup collection series. So, if you guys don't follow me on my Instagram or you are new to my YouTube, I'll tell you about this series. What is this series about? A few months back, I did a live video on my Instagram where you guys asked me to make this video. Well, I thought of making a series out of it because showing everything in a video would be like too big video and you guys might get bored and you guys would be like, कौन इतनी लंबी video देखेगा? So that's why I have made parts, I have made episodes of it. Like the first episode would be about base and where I stored my makeup, that place, the cabinet. The second video would be about eyeshadows, eyeliners, kajals. The third video would be about highlighters, blushes, and the fourth one would be about lipsticks and my makeup brushes, sponges and all. And fifth one would be about my accessories. It would be hair accessories, hair styling tools and these all things. And for even skincare, because ज़्यादा skincare भी नहीं है मेरे पास. So everything that I have little, that would be in the fifth and the final episode. So that's how it would go. So that's it. Now you guys know what the series is. You guys had asked for it, so that's why I'm making it. And every week I would upload a video from this series, and which is on Tuesdays I would upload this series, and on Fridays I would upload something else, my regular videos. So that's it. And I think I've done enough of blabbering. Oh wait, before I just start the video, also one more thing. A giveaway is live on my Instagram. You can go on my Instagram and check it out. Well, this is the post. Do check out this post and see all the rules which you need to follow to enter the giveaway. And finally, enough of blabbering, and now I think we should start the series. Okay, so these are my cabinets. I mean, these are not cabinets, these are side tables. Abhi, वैसे you guys know that this was the second side table was the other side of the bed. But recently we have shifted the bed. हमने बिल्कुल बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ा उधर से चढ़ने उतरने के लिए, एंड दूसरी कैबिनेट हमने यहाँ रख दी है बिकॉज उस साइड इट वॉजंट बीइंग यूज्ड. उसका पूरा मेरा ब्रदर उसका पूरा यूज़ नहीं कर रहा था, सो दैट्स वाई वी डिड दिस बिकॉज आई नीडेड मोर स्पेस एंड ही वॉज जस्ट वेस्टिंग द स्पेस विच ही हैड. सो दैट्स वाई हमने दोनों को यहाँ रख दिया फॉर मी, और वो वहाँ बंद कर दिया, वहाँ कुछ नहीं है. सो लेट मी टेल यू किस ड्रॉर में क्या है. हे गाइस, वेल दिस कैबिनेट, इसको मैं नहीं खोल रही हूँ, मतलब नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इसमें इज़ माई ब्रदर्स थिंग्स, मतलब उसकी दो चार चीज़ें हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर माई फ्यू ऑफ द मेकअप थिंग्स. ये दोनों मेरे मेकअप बैग्स है, मतलब ये बैग नहीं है, ये पॉलीथिन है. ये लास्ट अप्रैल में आया था एंड मुझे इसके लिए कोई खाली पाउच नहीं मिला है. सो दैट्स वाई इसको अभी तक इस पॉलीथिन में ही रखा हुआ है. एंड माई पाउच, दिस इज़ माई मेन पाउच में मेरा इतना कुछ है. एंड माई हेयर ड्रायर एंड माई स्ट्रेटनिंग आयरन, जो मैं अपने 5th वीडियो में दिखाऊंगी. तो अभी इन डिटेल नहीं दिखा रही हूँ. एंड नाउ लेट मी ओपन द अदर साइड एंड शो यू गाइस यहाँ क्या है. वेल, इधर बस मेकअप का सामान है और कुछ नहीं है. डिफरेंट चीज़ें. एंड यहाँ ऑल्सो मेरे यहाँ एसेसरीज है. एंड प्लस ये मेरा ब्रश सेट है, इसका बॉक्स पड़ा है, एम्प्टी बॉक्स टू स्टोर है. और ऊपर वाले ड्रॉर में आई थिंक ऐसे दिखेगा नहीं, आई हैव टू होल्ड द कैमरा. ओके, सो लेट मी शो यू यहाँ पे क्या क्या है. वेल, इस ड्रॉर में सबसे पहले है मेरा लेंस क्लीनर, या लेंस क्लीनर. एंड देन मेरे पुराने स्पेक्स, इन केस मेरा जो ये वाला है वो टूट जाए तो उसके लिए, तब के लिए. माई हेयर बैंड, जो मैंने अभी तक सिर्फ एक बार पहना है, और कुछ हेयर बैंड्स एंड एक स्क्रंची बिकॉज आई रियली डोंट हैव मच स्क्रंचीज़. पता नहीं क्यों, बिकॉज मुझे एकदम से स्क्रंचीज़ डिफरेंट स्क्रंचीज़ पहनने का शौक आया. पहले आई यूज़ टू हेट वेयरिंग डिफरेंट कलर्ड स्क्रंचीज़. मैं सिर्फ रबर बैंड पहनती थी, वो थे ये वाले, और इसकी हालत यू कैन सी.
और भी मेरे पास पड़े हैं, आई थिंक उस रूम में है, यहाँ नहीं है, या शायद आई थिंक ये लास्ट है, या दिस इज़ द लास्ट वन, बाकी ख़त्म है. देन या दिस इज़ माई सन ग्लासेस. ये सब मैं अभी खोल के नहीं दिखा रही बिकॉज ये सब मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बट ये मुझे ड्रॉर दिखानी थी तो इसलिए दिखा रही हूँ. देन सम सेफ्टी पिन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. दिस इज़ माई टेक्स्ट, इसमें मेरी टेस्टर लिपस्टिक्स आई थी बट आई केप्ट दिस, पता नहीं क्यों रख दिया मैंने, आई डोंट नो ये कभी काम आएगा भी या नहीं, बट मैंने रख दिया. एक ग्लू की बॉटल, वाओ ये ग्लू यहाँ है और मैं इसको उस दिन कहीं और ढूंढ रही थी, वाओ. देन सम क्लिप्स, अनयूज्ड क्लिप्स, अगर मेरे यूज़ में जो है वो खो जाए तो उसके लिए. कॉटन जो थोड़ी ज़्यादा मैंने यहाँ बचा के रखी थी पर अब यही बची है, मैंने यूज़ कर दी. एंड वैसलीन जो सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में यूज़ होती है, समर्स में मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. सो दिस इज़ प्रिटी मच इन माई कैबिनेट, इन माई ड्रॉ, बट अब ये खाली हो गया है. नाउ लेट मी शो यू ऊपर क्या है. ऊपर ये मेरा एक रफ रजिस्टर है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लाइक कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखना होता है इसी में लिख देती हूँ. माई पाउच, माई पेंसिल पाउच, आई कीप माई पेन्स, पेंसिल्स, एवरीथिंग हियर. ये रबर जो बाहर रह गया है. एलोवेरा जेल, मेकअप ब्रश स्टैंड, दिस बॉटल. एंड इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग इसमें क्या है, इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, ये मैं आप लोगों को पागल बना रही हूँ. इसमें कोई परफ्यूम नहीं है, इसमें इस गुलाब जल जो परफ्यूम ख़त्म हो गया था तो मैंने मुझे बॉटल बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसमें ये भर दिया गुलाब जल. सो यू नो द ट्रेंड, टेल मी यू आर इंडियन विदाउट टेलिंग मी यू आर इंडियन. वेल इंडियन हूँ मैं. देन मेरे क्लिप्स एंड माई रबर बैंड जो मैं जनरली अपने बाल बांध के रखती हूँ और तब यूज़ करती हूँ, अभी खुले हुए हैं. देन ऑल आउट एक नाइट बल्ब, मेरे ब्यूटी स्पॉन्ज का एम्प्टी डब्बा, 2 पीछे सैनिटाइजर्स की बॉटल है ये, एंड उसके पीछे है एक हैंड क्रीम नहीं फेस क्रीम जो अगेन मैं सिर्फ विंटर्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्टिकी एंड आई रियली कैन नॉट यूज़ इट इन समर्स. Guys, that's pretty much for my cabinets. Now let me just quickly show you my base and end this video because then again what's the point of making the video so long now because already हम episodes कर रहे हैं तो. So let me quickly show you my base. Okay, so this is my base makeup and let me quickly start with primers. Well, this is my one of the primers. This is Ultimate Radiance Primer from Urban Color, which is a Modicare brand, and it's for like dewy look. It's for people who have dry skin because for me it's like a little too much, so I really don't use it much. Then my another primer which is from Gosh, and again I really don't use it because it's anti-wrinkle and you know teenagers are not supposed to use anti-wrinkle things, so that's why I really don't use it. I've only used it once and this is my extremely favorite primer. Well, you can absolutely see from the bottle ki uski halat kya hai. So this is my favorite primer from Lakme. It's blur perfect, it's matte, that's why this is my favorite one. So now let me show you the next thing. Well, primers मेरे पास 3 ही हैं. Well, if you'll see मेरे पास इतना सामान नहीं है as compared to other beauty bloggers. Generally beauty bloggers have like a lot of things. मेरे पास उतना नहीं है. I have only limited things because I really don't like to like इतनी सारी चीज़ें रख लो और सब कुछ like expire हो जाएगा, so then you can't use. मतलब we use expired makeup but actually it is not good to use expired makeup. It damages your skin more, so prefer buying limited things and only buy a new thing when you have reused it. So इसलिए मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है. Well, now let me show you my concealer. Well, this is my concealer. It has a medium coverage, I will honestly say, but yeah, this is not review तो मैं सब कुछ नहीं बता रही इसके बारे में. So this is my concealer palette from Swiss Beauty. It's nice for the price they're offering. बहुत अच्छा काम करता है. Plus it also has a color corrector.
जो मैंने शुरू में ही यूज़ करा, अभी बहुत टाइम से नहीं यूज़ करा है, बट यार दिस इज़ गुड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग. And by the way, I have also ordered one more concealer for me, a liquid concealer for me, because a liquid concealer definitely gives a better coverage than this cream concealer. So that's why I've ordered a liquid concealer from Inside Cosmetics. It is like super affordable. Next I have Maybelline Fit Me foundation. Well, I love these foundations. Honestly, I mix either the 3 of the shades या first or second वाली shade. ये वाला मैंने सबसे कम यूज़ करा एंड दीज आर देयर ट्रायल पैक्स जो मार्केट में आई थिंक 50 रुपीज़ का एक मिलता है. आई हैड ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम स्मिटन एंड बाय द वे इफ़ यू हैवंट सीन माई स्मिटन ट्रायल वीडियो देन यू मस्ट सी दिस. I've linked it. You can click on the I button to see it. Well, these foundations are my favorite. They're so great. You must definitely use Fit Me foundation if you have a medium range. If you have a medium budget, you must definitely try them because they are not that cheap and they are not that expensive too. So they are in the medium range, so they are great, I must say. Then this is a BB cream which like doesn't gives any look. मतलब लगा के कुछ लगता ही नहीं that you have applied anything on your face. It doesn't covers anything. Plus it only has one shade which is this shade जो इसकी shade है. Let me show you. So that's why I hate it. Like कुछ भी cover नहीं करता है, कुछ भी. I would say कुछ भी. And plus this shade is very dark for me जो shade में ये है. But they do not have any other shade, so this is a very very bad product, I would say. Now next up for foundations, I have this foundation from Milani. It is Conceal Perfect 2-in-1 foundation and concealer. It's amazing, guys, but the only problem with this foundation is that it's a little lighter than my skin tone. एक या 2 shade lighter, so that's the problem with this foundation. Otherwise it's very good. And then there are these face sticks. One is from H&M and the other one is from Bonjour. This is from H&M and this is from Bonjour. This is like about to finish. How could I show you guys? I hope this is visible. No, it isn't visible. I'll have to open it. This is the face stick. बहुत थोड़ा सा बचा है. I've used it a lot. And it also has a brush to blend. Not a brush, a beauty sponge. And it's amazing, guys. It's amazing. And this one is from H&M. Well, wait, let me just open it up for you guys. Well, this shade is just like perfect for me. It's neither dark, it's neither light. This is my perfect shade. Whereas the face stick from Bonjour is a little dark for me, and if I try to use it as a contour, it's a little light. So that's why I would say this is my perfect shade. Next I have this bronzing powder from Gianni USA. It's not a proper bronzing powder. It is a blusher and bronzer 2-in-1. It can be used as both. But lately I've been using it over my eyes and I'm just loving the look it gives. So it's amazing. This is my contouring stick. No, this is not a contouring stick. I'm joking. This is a brown lipstick which I use as a contour because it really gives that contour wala finish. I don't know about you guys, but I have only used lipstick to contour my face and it actually works for me. Actually, I think it depends on different brands. Like you need to try different lipsticks from different brands, and I think the lipstick should be creamy for it to give that contour wala look. Next up is this Studio Fix foundation from MAC. It's amazing, but the only problem is that it is too dark. And actually it is a tester pack. Generally MAC doesn't have these packs, but my Masi bought it, so that's why I have it.
it was like given to her at a mall, तो वहाँ पे था. So generally they don't have, but I don't know how she got it. But ये है. But the only problem with this is that it's too dark. But anyways, I just mix it with my lighter foundation and it works for me. I have used it a lot, but thoda sa bacha hai, so that's why I'm not opening and showing you guys. And the shade is Studio Fix NY42. Okay, so now only two things are left. One is this Prime and Set Banana Loose powder, and the other one is my compact. Well, this Banana Loose powder can also be used as a primer, which I have used today, and it's working like very well as a primer too. Because the reason I used this one today, because my favorite primer has finished, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ करा आज, and it's working very well, I must say. This is how it looks. It's yellow in color, just like a banana. And lastly, this is my compact powder. Well, that's it for my base. So that's it for my base makeup, guys. Well, if you guys enjoyed watching the first episode, then stay tuned for the second episode, and do not forget to subscribe to my channel, and also follow me on my Instagram ID if you do not follow me out there. And do not forget about the giveaway, which is live on my Instagram. Do go there and participate in it, and tag your friends and follow all the rules basically. So that's it. I'll see you guys next time. Bye bye.